अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, माय नेम इज़ मोहम्मद शाहरुख एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ किप्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस अतीका खालिद, जिन्होंने सीएसएस 2025 के अंदर 39th पोजीशन हासिल की है और ये पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट हुई हैं। इसके साथ-साथ पीएमएस में भी शी स्टूड 38th इन पाकिस्तान और ये किप्स की बड़ी पुरानी स्टूडेंट्स हैं। इनके साथ बड़ी पुरानी एसोसिएशन है इस इदारे की, जिसके बारे में खुद बताएँगी। Congratulations, Atika. थैंक यू Thank you सर, so थैंक much यू for सो मच। joining us today. It is an honor to have you. थोड़ा सा मैम ये बताएं कि हाउस द फीलिंग, यकीन आ रहा है, नहीं आ रहा, रिजल्ट आया, क्या तासुरात हैं, क्या थॉट्स हैं? Sir, I am Alhamdulillah blessed and overwhelmed. Actually, I was taking my lecture in MPDD, or at that time when result was announced, so it was actually a very unpredictable thing. और फिर लिस्ट देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है। इनफैक्ट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड मोर देन डिजर्व। शायद हमारी इतनी एफर्ट नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा बरकत डाल देते हैं। और चूंकि मेरी मल्टीपल कमिटमेंट्स थी, सो आई थिंक कि मेरी इतनी एफर्ट नहीं थी, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह ताला ने जबरदस्त। बहुत। अच्छा, इस दफा मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं। 53rd सीटीपी की भी अभी जो पासिंग आउट हुई है उसमें भी वुमेन आउटनंबर्ड एग्जैक्टली। मेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। सो इट इज ग्रेट टू सी कि वुमेन टेकिंग लीडरशिप रोल्स। और आज भी माशाल्लाह जितने इंटरव्यूज लाइन है, ऑल ऑफ देम आर वुमेन। सो एग्जैक्टली। थोड़ा सा तीका ये बताएं अपनी जर्नी के बारे में, हाउ इट स्टार्टेड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कैसे सोचा कि सीएसएस के अंदर आना है, और कितनी पुरानी आपकी जर्नी है स्पैन करती? Sir, my journey is not very much long. I actually started in December 2023 after my house job. And during that time, I realized I have to prepare. Although I started preparing a little earlier, but because I had my FCPS exam, so that's why that exam ended in November. So I properly started in December हम्म। 2023. In Feb 2024, I appeared in CSS 24, and later on in CSS 25 in 2025. And here in front of you, sir, previously I did my house job and I'm a graduate of Sahiwal Medical College, batch 2023. जबरदस्त है। डॉक्टर्स का हमने देखा है सीएसएस में बहुत ज्यादा जो है ना वो सक्सेस रेट है। बिल्कुल। तो व्हाई इज दैट सो? आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा होती है, या आपके ख्याल में मेडिकल की फील्ड ऑल्दो रेलेवेंट नहीं है, बट डू यू थिंक इट हेल्प्ड यू इन दिस जर्नी? Sir, it's not relevant, but I think every person has to play with their own strength. For me, my strength was my research fellowship, ठीक है। because in all those fellowships, I actually used to write long articles, and that's why my English was quite fluent. So that's why I played with my strength rather than just my weaknesses के अच्छा ये subject है ऐसा। For example, जैसे social sciences का subject है, तो honestly मेरा कोई उनके साथ interaction ऐसा नहीं था. And for me, my preparation spans only few months. Even तो I could not practice essay. मुझे याद है कि मैंने 24 में अपना फर्स्ट ऐसे पेपर में जाके किया था, एंड आई जबरदस्त। क्वालिफाइड दैट। सो जनरली सो आस्किंग, कितना टाइम आपके ख्याल में तैयारी के साथ जस्टिस करने के लिए चाहिए होता है फॉर समबडी यू स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से वो स्टार्ट कर रहे हैं, आपके ख्याल में जस्टिस करने के लिए? ऑल्दो यू थिंक आपने यस सर, शायद उतना टाइम नहीं दिया, एग्जैक्टली, यू गॉट लकी और अल्लाह ताला ने फजल कर दिया, बिल्कुल सर। लेकिन जनरली अच्छी तैयारी के लिए? Sir, I think it is quite subjective, but at least there should be 1 year, because sir, there are people from various backgrounds, ट्रू। and you have to do justice with the subject by properly grabbing the concept. If you are doing it with notes or with crammed data, then I don't think it is going to work in the long run. So for me, although I had little time, but it was not a very, you can say, superficial study. So it Yeah. was a deep study. I used to do recommended books and also from various other sources. And for me, I already told my strength was research articles. So that's why I used to quote those research articles that I had previously studied apart from my medicine. So that was my strength and I played with it. जबरदस्त। सो हम लोग रिकमेंड करते हैं 10 to 12 मंथ्स इज अ Exactly. डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। Exactly. दूसरा, रिकमेंडेड बुक्स के अलावा रिसर्च पेपर्स की बड़ी गेम है, और यूट्यूब Yes. चैनल जो है वो बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं, थोड़ी सी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज करके यू कैन स्टैंड आउट। Exactly. लेट्स टॉक अ बिट अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सो ऑप्शनल्स आपके क्या थे, और आपका प्राइमरीली सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था? हाउ डिड यू डिसाइड कि दिस इज द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स जो मैं लॉक करूंगी? So for me, political science, criminology, environmental science, Islamic history and culture, and then Punjabi. These ओके, were the optionals both in CSS 24 as well as 25. ठीक। And sir, in terms of selection, I think it was my own selection. हम्म। I didn't chose it on the basis of what people are saying. हम्म। And I thought I can, sir, for environmental science, I realized it is actually coinciding with my own research या। articles areas. Apart from that, Islamic history, I thought it is quite easy and I can do it हम्म। by coinciding it with Islamic studies. हम्म। Okay, then political science, there was no other option, so I had to opt for Punjabi. Again, I was a little confused about psychology as well as Punjabi, but then I couldn't find sources about psychology, and I realized that in Punjabi I can also do that in PMS as well. So that's why that was the reason I
opted for Punjabi and criminology again. That was quite subjective, my own choice. अच्छा, दो तीन चीजें देखें, एक तो आपका इंटरेस्ट बड़ा मैटर कर रहा है ऑप्शनल की सिलेक्शन के अंदर, दूसरा आपके पास रिसोर्सेज कितना अच्छे रेडिली अवेलेबल हैं, और Exactly. ऑफ कोर्स ना चाहते हुए भी आपने बड़ा स्मार्ट कॉम्बिनेशन बना लिया जो यूजुअली बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग नहीं जाता या अच्छे मार्क्स आपको Exactly. सेफली, फॉर इंस्टेंस बिल्कुल. पंजाबी इज वेरी हाई स्कोरिंग, क्रिमिनोलॉजी यूजुअली अच्छा जाता है, पॉल के लिए यू डिडंट हैव अ चॉइस, एंड बाकी सब्जेक्ट्स में यू थॉट यू कुड डू वेल. Exactly. सो अगेन लिसन टू योर हार्ट माइंड एंड थोड़ा सा एनालिसिस करके आई थिंक यू कम अप विद अ गुड कॉम्बिनेशन. थोड़ा सा मैम ये बताएं कि आपका रिटन का स्कोर क्या था और इंटरव्यू का स्कोर क्या था. जिस तरह आपसे मेरी अभी बात हो रही थी, इंटरव्यू में यू थिंक कि थोड़ा सा उन्होंने आपको कम मार्क्स दिए हैं, सो व्हाई वाज दैट सो, और रिटन में आपको एज किस तरह से मिला? Sir, in written, I had 714. 714, that is amazing. So crossing 700 is pretty Yes. good. And sir, in interview, I scored 140. Okay. And sir, in PMS, I scored 163.5 in my interview. And that actually comes in the highest mark that has been allocated to the student. So I think there is a drastic difference between PMS interview as well as CSS interview. Yeah. But at the same time, we have to be content on whatever we achieve. There are many things, even in interview, जो कि judge हो रही होती हैं. So it is quite subjective. Again, I would say you have to give your best in written. Yeah. Because if you have a safe side, then I think interview scores में वो फिर इतना ज़्यादा difference नहीं create कर Yeah. पाते. If you are already good in written. So that is the basic thing. So I also think कि written के marks तो आपके काफी कंट्रोल में एक हद Exactly. तक होते हैं. बिल्कुल. इंटरव्यू में it can vary, you Exactly. never know कि actually क्या होगा. But if you could recall, so quickly, रिटन में आपके ख्याल में हाई स्कोरिंग स्ट्रैटेजी आपने कौन सी यूज की थी? मतलब आपने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया, या आप पेपर्स आपके बहुत ज्यादा डायग्राम्स ओरिएंटेड थे, या बहुत ज्यादा क्रिस्प थे? व्हाट आर द 2-3 थिंग्स दैट यू थिंक रिटन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प की अच्छा स्कोर करने में एग्रीगेट? Sir, I'll be completely honest. For me, I used to write 12 to 13 pages for every question. And sir, to be very honest, I couldn't make notes in both PMS as well as CSS. So for me, sir, actually, I used to do question at the spot. I used to do those things at the spot, but I had all those resources in my mind. One thing I would mention that I used to do recommended books that FPSC has provided at the end of syllabus. Yeah. And all those recommended books were cited in my all those questions. Yeah. To some extent where they are needed. Makes sense. Apart from this, sir, I used to make more headings. And but most of all, I actually focused on visual representation. Because in research, I realized that I had to present my data in the visual form. So that visual form was actually implemented in my papers. I used to make bar charts, bar graphs, and also visual maps, charts, and all that. जितना So that आप was aesthetically उसको exactly facilitate करें एग्जाम में. And sir, but most of all, my handwriting is quite improved and a good one. So that's why I had edge, and I was able to write 12 to 13 pages in the limited time. अच्छा, so quick question, were you able to complete all 4 questions in your exam? Sir, actually, initially, when I was doing a little practice, mock practice, it was not possible. But again, I would say if you have a practice, you can definitely do it. And but there should be a balance. If you are doing 12 to 13 question, then the 4th question should also be not be less than 10 or 11 pages. अच्छा, बाय द वे मैं ये करेक्ट कर दूं थोड़ा सा, जनरली ऑडियंस के लिए 13-14 सफ़े लिखना पॉसिबल नहीं होता और रिकमेंड भी नहीं करते. वी ट्राई टू सजेस्ट कि जी 7 to 8 Exactly. पेजेस आर मोर देन इनफ. Exactly. बट इनका एज ये था, इनको राइटिंग प्रैक्टिस थी, डॉक्टर थी, इनको आदत थी लंबा लिखने की, एंड शी वाज आल्सो एबल टू कंप्लीट ऑल 4 Exactly. क्वेश्चंस. बिल्कुल. सो ये नहीं है कि आप 2 सवाल लंबे लिख के बाकी आपके सवाल कंप्लीट ना हो. Exactly. दैट स्ट्रेटजी इज एक्चुअली not recommended going in to work. CSS. बिल्कुल. Next question, so you talked about English, कि आपकी इंग्लिश ठीक थी. आपके ख्याल में आपकी पहली अटेम्प्ट में क्रैक करने में CSS PMS का इंग्लिश का कितना रोल था? बिकॉज कैंडिडेट्स मोस्टली स्ट्रगल करते हैं. मैंने ये देखा है कि मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली अवाम बेसिक्स के साथ स्ट्रगल करती है. अंग्रेजी नहीं Exactly. ठीक, वोकैबुलरी, टेंसेस, स्ट्रक्चर एंड ऑल. सो डू यू थिंक इसको आप इसमें एज में आपको मिला था, और CSS में अंग्रेजी आपकी ठीक होने की वजह से कितना आपको फायदा हुआ है? Sir, to be very honest, I in fact think that I was actually 50% above all those candidates who had not been aware of even the basics. Because sir, I realized during all those years when I was doing my research practice and research articles also, sir, I realized that we used to do many mistakes, grammatical errors, Yeah. and sometimes they are neglected. But when you are writing a research paper, you have to be very meticulous. And that was the thing I followed. The very first day when I started my preparation, it was in the end of 2023. And sir, with a few months, even at that time, I was doing my job side by side in a private hospital. I was doing my FCPS preparation as well, surgery. Wow. But still, I was able to
qualify CSS 24 just because I had good English. Although Yeah. I couldn't score well, but the basic thing that I would say is English, and you have to be very much proficient. But again, I would say this does not mean that you cannot do it with the basic knowledge. Hmm. You can do it, but for good English, if I think it's So better. I think आपको कम तैयारी के लिए इसलिए भी आपने जस्टिस कर लिया कम टाइम के लिए क्योंकि आपको अंग्रेजी के साथ Exactly. स्ट्रगल नहीं करना पड़ा वरना यूजुअली लोगों का 3-4 महीने उसी में निकल जाते हैं Exactly. इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो अगेन आपने देखा है कि अंग्रेजी का बड़ा क्रूशल रोल है लास्टली ये बताएं कि आपके ख्याल में एक अच्छे इदारे का क्या रोल है जनरली और आपकी जर्नी किप्स के साथ कहाँ से शुरू हुई रिटर्न से लेके देन इंटरव्यू और उसके अलावा जनरली व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड आर देयर एनी नेम्स यू वुड लाइक टू मेंशन जिन्होंने आपको इस इदारे के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प और फैसिलिटेट किया Sir, actually, it started back in 2023, in the end of 2023. And I am always of the view that teachers, like in whatever field they are the best possible ones who can help you in any way. So for me, I really respect my teachers a lot, and they are very important for me. And I am so much indebted. Whatever I am today, I am because of my teachers. Even in my medicine, I am thankful to my teachers. Here in KIPS, I am thankful to all those teachers, even in KIPS Multan as well. So, sir, they are very much influential, and they had been the key towards making me achieve my goal. So, I'm very much thankful. And, sir, in terms of name, I think there are many names. Yeah. I'm unable to name, but definitely in KIPS Multan, there were many teachers. Sir Waqas Anjum, Sir Uzair, Sir Waqar, Madam Alina, and here Sir Shahid Wazir. So definitely lots of teachers have put their efforts, and I'm so much thankful to them. I am a person who always acknowledges the efforts. Somebody who's starting from scratch, उसके लिए एक अच्छे इदारे की इंपॉर्टेंस शुरू में है या वो पहले खुद तैयारी करे आपके ख्याल में क्या ज़रूरी है और इदारा ज्वाइन करने की जो एक ज़रूरत है वो आपके ख्याल में होनी चाहिए कि यार इसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी डायरेक्शन वाली या on your own हो सकता है CSS? Sir, I think this is quite subjective. If a person thinks that that person can do preparation on its own, then I think it is fine. But for those persons who are doing multiple things side by side, for them it is a little difficult. So it is better to find some mentorship so that your time is saved. But if you can do it on your own and you have luxury of time, then I think it is better to do self-study because at the same time there are many distractions as well. But it is quite subjective, I would say. अच्छा लास्ट एक दो मैंने और चीजें आपसे पूछनी थी मेरे दिमाग में आई मेरा दिल कर रहा था so you've been allocated to the police services of Pakistan. It's a uniformed service. Yes, sir. And generally it is not a service जिसमें बहुत ज़्यादा फीमेल डोमिनेंस है या बहुत ज़्यादा औरतें हमें देखने को मिलती हैं कुछ बड़े हमें काम उस तरह के वो हैं so how do you feel about that? Is it good? Is it kind of intimidating? What are your thoughts? और इसके बारे में क्या पुलिस का जनरली आपके क्या माइंड में एक इमेज और इंप्रेशन है now that you're joining the service as well? So I'm very much enthusiastic and excited to join this service because we have seen that in Pakistan we have actually set our own limitations. Yeah. But I think we have to set above all those limitations. We have to see that whatever suits us and whatever comes along the way, we have to create an impact. If it is PSP, then I have to create an impact according to my potential, whatever I could do. So that is my own enthusiasm. And to the aspirants, I would say that you have to give your best at whatever it is. If you are really willing to do something, then you will find opportunities. And if you are not willing, then there are many excuses that you won't be able to meet. So that's why. Medicine क्यों छोड़ा और CSS क्यों join किया? Main दो reasons क्या थी? Sir, I think I have not left medicine even still. And because I feel so much affiliated with my medical practice and also with my... But what pushed you, since you had such a stable career, so what pushed you towards pursuing CSS? So for me, I think excellence lies in some other thing. For me, like excellence was in my own contentment, and I realized that with that perspective, I can create a better impact. So that's Fair why enough. So you thought कि मैं society में ज़्यादा बेहतर तरीके से contribute कर सकती हूँ, मेरा impact ज़्यादा हो सकता exactly. है. Although medicine is also a very noble profession, Exactly. but CSS में you thought you could make a Exactly. better and bigger impact. Last question for those who are watching, जो इस वक्त देख रहे हैं, जिनके लिए अब आप माशाल्लाह inspiration हैं, you know, you have qualified, you know, you're a winner now. So आपका दिल से देखने वाले aspirants को, बच्चों को, खास तौर पे लड़कियों को क्या मैसेज होगा जो आप उनको देना चाहेंगे? Sir, in a brief way, I would say that you have to be very much consistent. If you really think that you can do, then I think you can do. You have to believe in yourself and all that you are. You must know that there is a power inside you that is greater than any obstacle. So you must keep on moving with the potential, and Allah Ta'ala will definitely bless you. And best wishes to all who are going to appear. Thank you so much. Thank you so much for watching. That was Dr. Atika Khalid. और आई होप बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी जो है वो मोटिवेशनल चीज़ें आपको इस कॉन्वर्सेशन से मिली होंगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.